Just very quickly, a very warm welcome, Sharvani. Good evening to everyone to the India Fact Quiz. Now, we have made this double the fun. You have two quizzes for the time that you spend coming to one, which is we have the English quiz, which starts sharp at 5. And then immediately after the English quiz is over, we'll give it a couple minutes. And then Meenal comes on and takes on the Hindi quiz. Again, the format is very simple. You need to log into www.kahoot.it. Don't download any app or anything of that sort. Use the browser, put the game pin in, put your name in, and we're good to go. It's as simple as that. All right, and what do we have for you? Well, we have 10 questions. This week, I've made it a little easy. You have one puzzle question, but 10 questions, true, false, multiple choice questions, and they're all nothing to do with anything that you get in a book or that you need to read up or study a lot about. It's just your observations, just your perceptions. Keep those aside, your biases, face those, tackle those, and yeah, that's it. You're going to win something. All right, this week we have a very interesting book, and I think these are books really, and these are issues that we all as Indians need to know about. And this book is called Where India Goes. It's about the problem of abandoned toilets, the fact that, while we make these ambitious policy decisions to have, in this case, 123 million toilets, a million toilets in 5 years, what happens is, even if you have the best intentions behind the best policy with the best, infrastructure and everything, if citizens and people are not prepared to adopt that, it's going to fail. And this book is trying to put data, facts, numbers, logic, ethnographic issues in perspective and stating what are those problems that is going to prevent India from being a truly developed country. And I think all of us will agree that until and unless we do not have people who don't go to sleep hungry in this country, who do not openly defecate, we can't call ourselves developed. So let's forget about the foreign, direct investment that is coming in, and the launches of Apple iPhones and whatever iPads and whatever. I think these really are the issues that we need to be seized about, and we need to tackle so that we can call ourselves a truly developed country. Otherwise, till that point, we're really nowhere. All right, so a little preachy, I'm sorry about that, but we're all good to go. Have had a little bit of change in my own personal setting. I'm sure you have noticed that the books that you saw arranged last week were a little different, or the week before were a little different than this week. Well, I've also moved places, and so I'm sort of adjusting as well, and I was therefore missing, and Meenal had to double up, which she does so generously. So yes, with that, I'm pretty much good to go. And if everyone is in place, I'm going to now share my screen. If we have any fence sitters, come on quickly, because we locked the quiz. So you won't be able to join in. And this one is fairly straightforward. So yeah, I think I'm going to share my screen now. So 3 lucky winners will get the book. It's a very incisive, a very reflective book called Where India Goes. It's by Dean Spears and Diane Coffey. I must admit, I have not read the book, but I am waiting to read this book. All right, okay. So with that, another thing, a couple things happening. We're sharing a lot of information about the other events that are happening around us. So there are some very good workshops that Boom is conducting. So please take advantage of that. We're also sharing
and we're going to start sharing the championship details. So please, everybody, I would urge you, use this as your practice session. So when the preliminaries start for the Game of Facts, the India Fact Quiz 2021, you guys automatically will very easily qualify. And we really do hope that, from all of, the group of you that come for this quiz week on week and score pretty well, we hope that you'll make it immediately to the regional finals. So that's a heads up. I've kind of given you a big cheat sheet here. So as much as you can, just do all of these quizzes and you're in the finals. Trust me. Okay, so with this, I'm going to share my screen and you're going to see your names hopefully on it. Fantastic. It's so good to see all of you. Dipankar, it's really nice to see you. And I'm just going to, Vanshika, Ayushi. I see Ayushi a couple times. So be a little careful if, it becomes a little difficult when we have to pick the winner. Rohit, Shashikala, Sharheen, hi, Rajiv, Udit, our official book reviewer, Bharat, Swati, Niharika, Ritika, Padmaja, Pratham, Prem, Shivaji, Akshay, Asit, welcome, welcome, welcome. This is the Game of Facts, and we're about to begin another round of 10 very interesting questions. But before that, we're going to put you through the grind and we're going to ask you a few poll questions. We want to get some ideas from you. We like to know how you're feeling today. So bear with us. It's also a practice session for those of you who have forgotten how to play this quiz or are new to this quiz and just, want to sort of get a little bit of a trial. All right, so with that, I'm going to start the poll questions. No scores for this. And you just can, and there are no wrong answers either, which is good. And let's see what we have. How do you pack for your holidays? I know the holiday season's coming up and we want to know whether you like it super light, you always have the heaviest bags, you carry just enough, or you leave with light bags, but you come back with heavy bags. There's always some dynamic that happens with packing and we're curious to know what kind of packer are you? Okay, so clearly it is carry just enough for me so it's not difficult. You don't have to ask anybody else for help, which is the smartest way to do it. And I somehow always fall short of that. I kind of fall in this category of leave with light bags, but somehow I don't know how I accumulate the baggage along the way. And yes, some of us do have the heaviest bags as well. Okay, the next question. Do you have any year-end plans? Some of you could be like, yeah, tickets booked, all set. I am raring to go. Not yet. What's the hurry? Hello, we're still in, October end. I'm going to wait out this year is probably what some of us are going to say. And it's like, I don't know, because I'm expecting overbooked flights and hotels. And I think there's some revenge travel happening. Clearly, most of us are saying, hey, hang on. Not yet. What's the hurry? And then we also have a number of us saying, I'm going to wait it out, which is probably a smart thing to do. Because I think this year there's going to be all of this pent up frustration of those who haven't gone on holidays for too long and are going to say, I don't care what happens, I'm going to go. So maybe the smart ones will say, hey, let's wait it out this year and see what happens. And we have a very small group of people who are already booked and set to go. I would have loved to be in that category, but I'm not there yet. All right. And the last one is a word cloud, which you always do so beautifully for us. We're asking you this year, if the IFQ team, and we're clearly overworked and overstressed, where should we go on holiday? What would you recommend? Tell us your favorite places, and maybe, we could start considering that. I know Shiva's definitely planning to go on holiday at some point. Meenal's already in a place which is pretty much a holiday destination.
So yeah, I'm sure Mirat would like to go on holiday as well, and so would Muskan. Give us all your ideas. Okay, I said Jammu Kashmir. Well, we already have someone there. Arunachal Pradesh, that's a good idea. Odisha, Canada, Karnataka, the Andaman Nicobar Islands, Jaintia Hills, okay. Himalayas, Rishikesh, Paris, oh, why not? Munnar, Goa, Switzerland sounds idyllic. Coorg, Maldives, London, any hill station, okay. Meetup, Google Campus, Himachal, Parvati Valley, Manali, New Zealand, Ayodhya, thank you very much. But there might be something there actually. Jim Corbett, I think that sounds very nice. Ladakh, Mars, you know, I think very soon that will definitely be on the consideration chart. Hawaii, America. Okay, America is going to open up for us soon. So thank you all so much for this. And we're going to take a snapshot of this and we're going to keep it up and pin it up on our boards and see where we can land up. All right. Okay. So with this, we come to the end of the little bit of fun that we get to have. And we start off with the real fun, which is the quiz. And now I'm going to get into the quiz. It's 10 questions. We've mixed it up. So a lot of true or false, multiple choice questions, and sort of all jumbled up. And the good news, only one puzzle question. All right. So all the best, everyone. And yeah, I hope you make it to the podium. Okay. Currently in India, there are X million people living below the poverty line. Is it 170 million? Is it 270 million? Is it 70 million or 35 million? We are classified as a low to middle income country by the World Bank. Okay, so 14 of you got it right. This number is extremely important. And we have to remember that poverty is multi-generational, intergenerational. It is an extremely complex issue to tackle with. It takes decades and decades of policy making, good, bad economics, good, bad politics, good, bad everything to actually pull people out of poverty. And once they are pushed back into poverty, it's very difficult to bring them back out of it. It takes decades and decades of work. So 270 million is a number I think we all must remember. And whatever we do, in whatever way we can, it is incumbent on us to waste not, want not. It could be when you see somebody who really is in need, maybe give a little bit. If you think that there is something that you can do and which is within your reach to help someone, give them employment, maybe help them in some way, you should think about this 270 million not very lucky Indians who are part of our country that we need to keep in mind. All right. So this is the first question, and whoever really is on the scoreboard have got the answer right and got it fastest. But things change, as we all know. It's Sri Harshita, Darshan, Yukta, Shirheen, and Ritish Kumar. Okay. The next question is the true or false, and you get double points for this. Under India's disaster management law, heat waves are recognized as a disaster. Is this statement true or false? Climate change, as we all know, is becoming a real issue, and we'd just like to know whether, okay. This is a bit surprising and shocking. In fact, my colleague Isha is also, and she heads factchecker.in. This is, I think, one of the stories that India Spend had worked on. And it was really surprising to note that heat waves are not even considered a disaster under India's
National Disaster Management Protocol, which then tells you that clearly we have an issue here because we are one of those top 5 affected countries by climate change, and we're extremely vulnerable to heat waves. And also, when you think about the 270 million vulnerable people who are living below poverty line, it all comes together, and you know that this is something the government has to recognize. Otherwise, we're going to have people dying because of heat waves, and this is really not something that they should be losing their lives for. All right. Okay. So we'll see what happened on the scoreboard. It was an interesting question because we have a new list of people on the scoreboard. It's Ritish, Naisi, Anjali, Abhilash, and Anushka. Another true or false coming up, and again, double points. During the first lockdown in 2020, household air pollution decreased by 2%. Is this statement true or false? Okay, so if anyone saw, I kind of gave the answer. Sorry about that. But the statement is false because actually, in the first lockdown last year, what was detected was an increase by 2% in household air pollution. Now, we all need to be cognizant of the fact that when you use different fuel sources at home, when you use different, it could be wood, it could even be, your LPG gas, it does leak certain chemicals, and the ones who are most affected by household air pollution are women in the house. Also, for that matter, our refrigerators, as important and essential as they are to our everyday lives, also release certain chemicals into the air, which definitely have an impact. Okay, let's take a look. I mean, if there's any question that I should address, or I'm happy to do that. I'm just sort of scrolling in. Okay, all right. We're going to go to the next question. Please don't get dejected at all if you feel like, hey, I'm slipping down the rung, or it's not really moving very much, or I'm not really getting there. You will. Just hang in there. Okay. We'll take a look at the scoreboard, and it's now Ritish, Naisi, Abhilash, Nikhil, and Swati on the top 5 position. Okay, next question coming up. And this one again is double points. If full day childcare is provided to poor working women, their incomes would show signs of increasing by, so we know it's going to increase for sure. Is it 25%, 35%, 50%, or 40%? Okay, so 20 of you that went for 50%, you're right. At the very least, if a poor woman can get access to full day childcare, which is about 8 hours, her chances of increasing her income by 50% is almost sealed. Chances are she could even double it. So that's really the kind of potential that we're losing out. And just to think about the fact that, how it's one of those things that, seems so obvious, but yet childcare is something that is so hard to come by, especially for, the lower middle income families. And it is something that really has to be
talked about by policymakers. We need government to take charge of this because it can actually increase incomes. When it increases income, personal consumption increases. When personal consumption increases, the economy is doing well. So it's kind of all a virtuous cycle, and it all starts with a simple thing as this. All right. We'll see what happened on the scoreboard, and it's now Ritish, Niharika, Darshan's back on, Rajiv, and Nice. With this question, Pratham Shetty is the highest climber. The next one is a true or false, and you get double points for this. Households headed by women have a lower debt asset ratio compared to those led by men. Very simply, households which are led by women have lesser debt burden compared to households led by men. Is this statement true or is it false? So 41 of you are clearly onto something here because it's very interesting how, somehow these, and I'm very curious to know on what basis did you make this assessment? Was it in the knowledge, or was it your, anecdotal evidence or something that you have seen in your own families? Or I'm curious. But it's fascinating when we think about debt. The households that are headed by women normally do not have these kind of risks attached to them in terms of debts that they are burdened with compared to households led by men. However, this can also be construed in a different way. It could be that, they're not getting access to credit. So sometimes it's very complex when you look at these kind of issues, but it also allows for opportunities where probably there can be more funding for households that are led by women, etc. Of course, there are microcredit institutions and, other things, but still we're a little hesitant to give money to women. In fact, empirical evidence tells us that when you provide credit to a woman, her chances of you getting that money back are much higher compared to men. I'm not saying this, studies are saying this, but with that, we'll take a look at the scoreboard. And it's now Ritish, who's kind of hung on there for some reason, but the lead's getting close, Ritish, so you better be careful. Rajiv, Naisi, Vinny, and Abhilash. The next question, again, another true or false, and you get double points for this. We're on the issue of debt. More households in North India are in debt compared to households in South India. Is this statement true or false? Now, we're now comparing geographic regions. So 32 of you are correct. In fact, more households in South India are in debt compared to households in North India. And it's Ritish, Naisi, Abhilash, Nikhil, and Dhruhi. And we'll get into the next question because things are moving along very well, double points. Coal accounts for X% of electricity in India. Is it 50%, 40%, 60%, or 70%? So 30 of you said 70%, and you are right. This is a very important question, keeping in mind that world leaders are going to meet very soon in Glasgow, and they have to make some very tough decisions. Now, we all know that coal is really not a very viable, ought not to be a fuel that we depend on for too long, because the impact it has on the environment is long lasting and damaging. We have to move towards renewables, but currently India is, as you can see, at a state
where 70% of our electricity depends on this rather dirty fuel, if you can call it that. So oil, coal, gas, these are things that we have to reduce our dependency on and move to renewables. Unfortunately, we have actually gone into the mode where we are commissioning more coal-based power plants instead of phasing them out. So there's some sort of reverse happening here, but we need those technologies. We need that innovation that's going to give us that leapfrog where we get energy security. So we definitely need electricity for life, living, economic development, but it cannot be at the cost of the climate any longer. So these are going to be some tough decisions that are discussed in the coming COP26, which starts, I think, on October 30th. Okay, so it's now, like I said, there's always some change that happens, but British could just well be back at the end. It's Naisi, Abhilash, Druhi, Udit, and Isha. And I'm going to get into the next question. True or false? Unexpected rains in coal-producing areas have aggravated coal shortages. Is this true or false? We're talking about, if you say unexpected rains, it's really because of climate change. So we're attributing that directly to coal shortages. I don't know what the linkage is. Okay, so 38 of you are correct. So climate change, so unexpected rains really happens when climate change is showing its full glory. And we are seeing that. So very heavy flooding, roads blocked, etc., do not allow coal producing mines to get the coal to the power plants. And currently in India, we're at a situation where majority, more than, I would say nearly 3/4 or probably more of all our power plants actually are running on a very low amount or stock of coal with them. So with this, we could really be facing a very difficult crisis. Okay, and the scoreboard. Abhilash, Udit, Isha, Druhi, and Naisi. And we still have 2 questions, so everything could change. Now, double points for this one. The first country in the world to administer 1 billion vaccine doses. Is it India, US, China, or the UK? Okay, I love this. And this is why we exist. So in fact, my colleague who's observing this quiz, Isha Bajpai, she has worked on this story. It's on factchecker.in. I would urge all of you to please once in a way take a look at that space as well. Because, and I'm, don't be embarrassed or don't feel like, oh my gosh, how did I get this wrong? If you did, because a very senior person in the government, a public figure, made an announcement stating that India was the first country in the world to administer 1 billion vaccine doses. Now, this probably would have gone down all the way had it not been for a small group of renegade fact checkers who are actually trying to see and hold our public servants to account, because this kind of misinformation leads us to making some very wrong decisions. And sometimes our perception then gets clouded. And when you actually look at the numbers, China hit the 1 billion mark much before. I'm not really, I know it's June at some point, but in fact, China has gone on to hit the 2 billion milestone.
So it is not India. It's always good to feel a sense of pride in what your country does. It's extremely important. It's very important just from a point of view of feeling positive, feeling engaged, feeling active. But you should never tolerate, when things like this are allowed to fly past. Because we need to know, I think it's very important to understand the China model of how they were able to get to 2 billion doses in a very short time. Now you can say, oh, but this is China, they can, do whatever. But I think sometimes you have to keep that aside and you have to say, okay, what are the learnings that I can get? Because this is not going to be the last pandemic the world is going to see. However, we could all learn a lot from these examples of countries that have actually gone on to achieve this. So China is the first country in the world to administer 1 billion vaccine doses. And no, it is not India. Does that make us anti-national for saying that? Does that make us not proud of our country? Not at all. I don't think the good thing about data is it doesn't sort of, make you anything. It just makes you more factful, as simple as that. Right. Sorry for the long explanation. It's Abhilash, Udit, Isha, Druhi, and Naisi. And we have the last question coming up, which is a puzzle. As always, you need to stack it from high to low and hit the submit button. We're asking you about India Post letterboxes. Rank the states from high to low based on the letterboxes in those states. And your states are Maharashtra, West Bengal, Gujarat, and Kerala. The states which have the highest number of letterboxes to the lowest, don't forget to click on the submit button. I didn't know this answer either, so just have a blast. Whatever you think is right, go ahead and put that in. Worst comes worst, you've not got it right, but you know something interesting. So I know the art of letter writing is kind of lost now, but just so you know, Maharashtra has the highest number of the lot of 4 states that are mentioned here. It is about 38,505 letterboxes. Then you have West Bengal, which is in the range of 27,000 and some number, 27,031. Gujarat has about 23,389, and Kerala has about 14,563. Kerala and Punjab have a very similar number in terms of the number of letterboxes that they have, which have been placed by the India Post. And in general, when you look at the method behind placing of a letterbox, it's not as simplistic as, okay, there's a hole there, or maybe there's a place there that can, we can put a letterbox. It's not really as much as that, as much as it is about we want to create a system where there's a ratio of people who are served by the India Post. So on that basis is how they will then decide where they put a letterbox or not. It's kind of fascinating when you always get this kind of data. And with this question, I will now get into the final scoreboard, and I hope we see some surprises there. Just want to thank you all so much for joining us. Don't go anywhere. Don't hit any button. We're going to come up with the Hindi quiz with Meenal, and Meenal is in Srinagar. And she just told me that it's starting to snow there. And I was so envious because I am sweating it out in sultry Pondicherry. So I'm going to now go to the podium, and this week, let's see what we have. In third position is Isha.
Congratulations, Isha. In the second position, Udit is going to do the review of where India goes. And in the top position, this week we have Abhinash. The runners-up are Druhi and Mayur. Guys, if you're the runner-up, remember, you're very quickly to be on the podium. All right, so congratulations to all of you. Please just stay with us. Meenal's going to be here very shortly. I'm going to hang around and enjoy the Hindi quiz as well. So yeah, just hang in there. Another very interesting book coming up. हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम। हिंदी क्विज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रश्मि, आई थिंक योर स्क्रीन इज स्टिल शेयरिंग। या यू विल हैव टू एग्जिट स्क्रीन शेयरिंग। रश्मि, योर स्क्रीन शेयरिंग इज स्टिल ऑन। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ और आप जल्द से जल्द गेम पिन देख पाएंगे। और जब तक आप लोग गेम में एंटर करते हैं तब तक मैं आप सबको आज की किताब के बारे में बताऊंगी। तो आज का जो हमारा गेम पिन है वो है 578082 आप लोग गेम में एंटर कीजिए, जल्दी से पिन डालिए और थोड़ी देर में क्विज स्टार्ट होगा। लेकिन उससे पहले जो आज के हमारे 3 विजेता होंगे वो कौन सी किताब जीत कर जाने वाले हैं। अगर आप हमारा सोशल मीडिया देखते हैं, हमारी स्टोरीज फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा आज की किताब का नाम है आसमान से ऊंची उड़ान। और ये किताब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखी है। बहुत ही खूबसूरत किताब है क्योंकि इस किताब में उन्होंने लाइफ लेसन्स दिए हैं यूथ के लिए। और वो कुछ ऐसे लेसन्स हैं जो चाहे आप यंग हैं या आप एक बच्चे हैं या आप एक बूढ़े इंसान हैं तो भी वो लाइफ लेसन्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। उन्होंने अपने जीवन में लगभग 21 मिलियन चिल्ड्रन से वो मिले और यंग लोगों से मिले, इंडिया में भी और बाहर भी। और उनसे उन्होंने बातचीत करी कि कैसे जो नॉलेज की पावर है वो कितनी इम्पोर्टेंट है और कैसे मॉरल बिहेवियर इम्पोर्टेंट है एंड कैसे यूथ एक चेंज लेकर आ सकता है एक कंट्री में। तो इस किताब में उनके लगभग 2000 लेक्चर्स हैं जिनको कंपाइल किया गया है और वो टीचर्स के लिए हैं, स्टूडेंट्स के लिए हैं, सबके लिए हैं। बहुत ही खूबसूरत किताब है। इट इज फिल्ड विद वार्मथ, इंस्पिरेशन एंड इट इज अ मस्ट रीड फॉर ऑल इंडियंस, चाहे वो यंग हो या ओल्ड हो, सबके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीड है। तो आज के जो हमारे 3 विजेता होंगे वो ये किताब जीत कर जाएंगे। और हमने पिछले क्विज में कितनी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज देखे हैं, सीखे हैं। आई एम होपिंग कि आज के क्विज में भी हिंदी क्विज में भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। और क्योंकि ये मंथ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है तो मैंने आज का जो क्विज है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पर थीम किया है। तो आई एम होपिंग कि आप सबको इनके क्वेश्चंस के आंसर्स आएंगे और आप लोग जल्द से जल्द स्कोरबोर्ड पे आएंगे। And welcome to all of you, Mukesh, Sharwani, Anuj, Anna, Ritesh, Sheetal, Adi, Neelab. Thank you so much for staying for the Hindi quiz as well. और अब हम क्विज को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चंस होंगे वो पोल क्वेश्चंस होंगे, कोई अंक नहीं होंगे। और गेम कैसे खेलनी है वो आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि अभी अभी आपने इंग्लिश क्विज भी खेला है। लेकिन सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ जो चेंज होगा वो जो क्वेश्चंस हैं और आंसर्स हैं, जो क्वेश्चंस और ऑप्शंस हैं वो हिंदी में होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दीपांकर, नेवर टू लेट। चलिए हमारे फर्स्ट पोल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। रश्मि ने आपसे हॉलीडेज के बारे में पूछा, मैं आपसे फेस्टिवल्स के बारे में पूछना चाहती हूँ। क्या आप विभिन्न त्योहारों का महत्व और इतिहास जानते हैं? क्या आपको फेस्टिवल्स का जो हिस्ट्री है उसके बारे में आप जानते हैं? मैं तर्क और इतिहास में बहुत दिलचस्पी रखता या रखती हूँ, तो आपको पता है कि फेस्टिवल्स के पीछे क्या रीजनिंग है, क्यों उन्हें सेलिब्रेट किया जाता है, या आपको त्योहार पसंद है तो आप रीजनिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं देते?
या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिससे त्योहार इतने पसंद नहीं है, आप ज्यादा एंजॉय नहीं करते फेस्टिवल्स को, या आप त्योहार का गहरा अर्थ या आपको लगता है कि हर त्योहार का गहरा अर्थ होता है। ओके, तो 18 लोगों ने कहा है कि आप तर्क और इतिहास में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, तो आई एम श्योर कि आपको हर फेस्टिवल का उसके पीछे की स्टोरी पता होगी कि ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है और क्या इसका रेलेवेंस है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। 18 लोगों ने कहा है कि आपको हर त्योहार पसंद है, आपको त्योहार पसंद है तो आप इररिस्पेक्टिव ऑफ द रीजनिंग एंड हिस्ट्री आपको फेस्टिवल्स एंजॉय करना अच्छा लगता है। 4 लोग ऐसे हैं जिन्हें फेस्टिवल्स ज्यादा पसंद नहीं है, और 20 लोगों ने चूज किया है हर त्योहार का एक अर्थ होता है, गहरा अर्थ होता है, विच इज ट्रू। एवरी फेस्टिवल हैज एन इम्पोर्टेंस एंड अ वेरी स्पेशल मीनिंग अटैच टू इट। तो चलते हैं वर्ड क्लाउड की तरफ। आपको त्योहारों के बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? व्हाट डू यू लव अबाउट फेस्टिवल्स द मोस्ट? सेलिब्रेशंस, या रिलेटिव से मिलना, या फायर क्रैकर्स बर्स्ट करना, या खाना पसंद है आपको डिफरेंट त्योहारों पे, मिठाई पसंद है, जो डेकोरेशंस होती हैं वो पसंद है? ओके, एंजॉयमेंट एंड फैमिली। फैमिली और हॉलिडे अगर साथ में हो तो वो एक बहुत ही स्पेशल इवेंट हो जाता है। फेस्टिव वाइब्स, मीटिंग फ्रेंड्स, फूड गैदरिंग, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। हाँ, हमारे देश में इतने त्योहार मनाए जाते हैं, इतनी डाइवर्सिटी है कि हर त्योहार का हम हर त्योहार को अनुभव कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। शॉपिंग, टीम वर्क, मीटिंग एवरीवन, पोंगल, दीपावली, स्वीट्स, प्रेयर्स, परिवार के साथ उत्साह। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। आपने अपने वैल्यूएबल ओपिनियंस हमारे साथ शेयर किए हैं। अब मैं क्विज स्टार्ट करने वाली हूँ, और आई होप कि आप लोग एंड तक स्टे करेंगे, क्योंकि एक के बाद एक जो क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे डबल पॉइंट्स के क्वेश्चंस होंगे, एंड आई एम श्योर जो स्टार्टिंग में लीड जिनकी होगी वो एंडिंग में आई होप वो मेंटेन कर पाए, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो भी ऊपर आ पाएंगे। तो प्लीज स्टे टिल द एंड, और आज का क्विज स्टार्ट करते हैं। विश्व स्तर पर 10% ब्रेस्ट कैंसर पुरुषों में होते हैं। ग्लोबली 10% ऑफ ब्रेस्ट कैंसर्स अकर इन मेन। क्या ये सही है या गलत? ये हम ग्लोबल डेटा की बात कर रहे हैं। विश्व स्तर पर 10% ब्रेस्ट कैंसर पुरुषों में होते हैं। आप में से 16 लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, ये गलत है। काफी लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ब्रेस्ट कैंसर पुरुषों में होता भी है या नहीं। ब्रेस्ट कैंसर पुरुषों को होता है, महिलाओं में ज्यादा होता है, लेकिन पुरुषों में भी हो सकता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो यही है कि फीमेल जेंडर में ही ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, लेकिन जो मेन है उनको भी हो सकता है। और अप्रोक्सीमेटली 0.5 to 1% ऑफ ब्रेस्ट कैंसर जो केसेस होते हैं वो पुरुषों में होते हैं। और जो ट्रीटमेंट है वो भी बिल्कुल सेम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं, जो विमेन के ट्रीटमेंट के लिए होते हैं, जो महिलाओं के ट्रीटमेंट के लिए होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए, वही ट्रीटमेंट को फॉलो किया जाता है। लेकिन ये जो परसेंटेज है ये कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के बाद स्कोरबोर्ड को देखने के लिए, और आज सबसे पहले अनुज ने सही करेक्ट आंसर दिया है आज के फर्स्ट क्वेश्चन का। उनके बाद है मदन, नीलभ, निहारिका और नाइसी। जल्दी से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये डबल पॉइंट्स के लिए है। यदि सभी संभावित मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को नियंत्रित किया जाए तो ब्रेस्ट कैंसर से के विकास को 30% तक कम किया जा सकता है। Risk of developing breast cancer can be reduced by 30% if all the potentially modifiable risk factors are controlled. क्या ये सही है या गलत? आप में से 35 लोग बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया है, ये सही है। कुछ ऐसी बिहेवियरल चॉइसेस हैं जिन्हें अगर फॉलो किया जाए, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें अगर फॉलो किया जाए
तो उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर की जो रिस्क हैं वो रिड्यूस हो सकते हैं, 30% तक रिड्यूस हो सकते हैं। और वो कुछ ऐसे चॉइसेस हैं जैसे कि प्रोलॉन्ग ब्रेस्ट फीडिंग, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, रेगुलरली कुछ फिजिकल एक्टिविटी रखना ब्रेस्ट कैंसर को रिड्यूस कर, उसके रिस्क को रिड्यूस कर सकता है। वेट को कंट्रोल में रखना भी रिड्यूस कर सकता है रिस्क को। और जो अल्कोहल का हार्मफुल यूज है उसे अवॉइड करना, या टोबैको स्मोक का जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उससे दूर रहना, जो प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ हॉर्मोन्स, एक्स्ट्रा हॉर्मोन्स का जो यूज होता है उससे अवॉइड करना, और रेडिएशन एक्सपोजर से दूर रहना। इन कुछ चॉइसेस से जो रिस्क फैक्टर है वो 30% तक कम हो सकता है। तो अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन हो सकती है अगर पहले से ही हम कंट्रोल करें कुछ चीजों को। हमें ऐसा लगता है कि कुछ डिजीजेस हैं जो आउट ऑफ आवर कंट्रोल हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। समटाइम्स अगर अर्ली डिटेक्शन होगी या टाइम पर डिटेक्शन होगी तो जो रिस्क हैं वो कम हो सकते हैं, जो डिजीज की गंभीरता है वो कम हो सकती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना हमें एक तो इजी अर्ली डिटेक्शन की तरफ ध्यान देना चाहिए और प्रिवेंशन की तरफ। तो इस क्वेश्चन के बाद हमारा स्कोरबोर्ड ऑलमोस्ट सिमिलर है, लास्ट टू पोजीशंस पे थोड़े चेंजेस हैं। अनुज, मदन, नीलभ, मुकेश और पद्मजा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाले सभी कैंसर का कितना प्रतिशत है? %, 20%, 4% या 9%? In India, breast cancer accounts for X% of all cancers in women. हमारे देश में जो टोटल कैंसर्स हैं उनमें से ब्रेस्ट कैंसर की परसेंटेज कितनी है महिलाओं में? अठारह लोगों ने सही उत्तर दिया है। मैक्सिमम जो लोग हैं वो 20% के लिए गए, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो है 14%। और जो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है और उसके अकॉर्डिंग जो ब्रेस्ट कैंसर है वो मोस्ट कॉमन कैंसर इन विमेन इन इंडिया है। और 14% जो केसेस हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं आउट ऑफ ऑल कैंसर्स। और ग्लोबली अगर हम बात करें तो लगभग 2.09 मिलियन केसेस हैं ब्रेस्ट कैंसर्स के, और उनमें से 6,27,000 डेथ्स रिकॉर्ड हुई थी। तो इस क्वेश्चन के बाद हमारा स्कोरबोर्ड टोटली बदल गया है। अब मदन सबसे टॉपर है, उनके बाद है पद्मजा, उनकी एक आंसर स्ट्रीक है फॉर 3 करेक्ट आंसर्स इन अ रो। उनके बाद है मुकेश, विष्णु और अनुज। तो आप देख रहे हैं कैसे कैसे नए नाम जो है वो हमारे स्कोरबोर्ड में आ रहे हैं, इसलिए प्लीज एंड तक रहिएगा एंड आई एम श्योर कि आप भी अपनी पोजीशन यहाँ पर बना लेंगे। पजल क्वेश्चन फॉर डबल पॉइंट्स। इन कैंसर के प्रकारों को महिलाओं में उनके प्रसार के आधार पर ज्यादा से कम में क्लिक करना मत भूलिएगा। Rank these types of cancers on the basis of prevalence in women. ट्वेंटी सेकेंड्स और हैं आपके पास। आई एम होपिंग कि इसका आंसर काफी लोग सही देंगे, तो देखते हैं। ओके, ओनली 2%, बट दैट्स ओके, क्योंकि पजल क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं ये हम मानते हैं। और हमने देखा है हमेशा कि पजल क्वेश्चंस में बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो करेक्ट ऑर्डर में काफी लोग दे पाए जिनका आंसर। तो जो करेक्ट ऑर्डर है वो है ब्रेस्ट कैंसर, उसके बाद लिप और ओरल कैंसर, उसके बाद सर्विक्स कैंसर और उसके बाद लंग कैंसर एंड इसके बाद गैस्ट्रिक कैंसर आता है। तो महिलाओं में जो सबसे ज्यादा केसेस होते हैं वो इस ऑर्डर में होते हैं। और कैंसर्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। जो कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, जैसे कि मैंने बताया, अर्ली डिटेक्शन से प्रिवेंट किया जा सकता है।
और ये जो टॉप 5 कैंसर्स हैं, ये मेन और विमेन में टोटल जो कैंसर्स हैं उनका उसका 47% तक ये कैंसर्स होते हैं। तो ये सबसे ज्यादा होने वाले कैंसर्स में से कुछ कैंसर्स हैं। और जिन्होंने सही उत्तर दिया वो आई थिंक मदन है। उनके बाद स्कोरबोर्ड बिल्कुल सेम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में हर 2 नई ब्रेस्ट कैंसर से डायग्नोस्ड महिलाओं में से एक की इससे मृत्यु हो जाती है। For every 2 women newly diagnosed with breast cancer, 1 woman dies of it in India. क्या ये सही है या गलत? (27 of you आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। जितने भी नए डायग्नोस्ड, जितने भी महिलाओं में नया डायग्नोसिस होता है, हर 2 नई महिलाओं जिनका कैंसर डायग्नोस होता है, ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस होता है, उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है। तो इस लेवल तक जो डिटेक्शन है वो इतनी लेट होती है कि कुछ क्योर बचता नहीं है और वो काफी लेट स्टेजेस पे डिटेक्ट होता है, इसलिए जो रिजल्ट है वो सिर्फ डेथ होता है। और इस क्वेश्चन के बाद मदन अभी भी अपनी लीड मेंटेन कर रहे हैं। उनके बाद है मुकेश, अनुज, विष्णु एंड 57808220। ओके, अगर आप ये क्विज जीतते हैं तो आई एम होपिंग आप अपना प्रॉपर नेम हमें बताएंगे, क्योंकि उसके बिना हम आपको बुक नहीं भेज पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में महिलाओं में नया पाया गया 10 में से एक कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है। क्या ये सही है या गलत? 1 in 10 newly detected cancer in women in India is breast cancer. सोलह लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है। ये गलत है, क्योंकि रफली 1 in 4 जो कैंसर्स हैं, जो न्यूली डिटेक्टेड कैंसर्स होते हैं, वो ब्रेस्ट कैंसर होता है। और ब्रेस्ट कैंसर है जो इट अकाउंटेड फॉर ऑलमोस्ट 27.7% ऑफ ऑल न्यूली डिटेक्टेड कैंसर्स इन वुमेन, व्हिच इज रफली 1 in 4 वुमेन। तो चलते हैं हमारे स्कोरबोर्ड की तरफ। और अनुज अब उन्होंने अपनी लीड बना ली है। उनके बाद मदन अब सेकंड पोजीशन पे आ चुके हैं। आदित्य, जो कि अभी तक हमारे स्कोरबोर्ड में नहीं थे, कहीं से जंप करके स्कोरबोर्ड में आ चुके हैं 57808220। एंड देन वी हैव मुकेश छाबड़ा ऑन द 5th पोजीशन। और इस क्वेश्चन के साथ रोहित 14 प्लेसेस अप है, 14 प्लेसेस अप, एंड ही इज द हाईएस्ट क्लाइंबर। होपफुली नेक्स्ट क्वेश्चन में आप हमारे स्कोरबोर्ड में होंगे रोहित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक और डबल पॉइंट्स का क्वेश्चन। महिलाओं की कुल कैंसर मौतों में से कितने प्रतिशत मौतें ब्रेस्ट कैंसर की वजह से होती हैं? तो जो टोटल डेथ्स होती हैं, कैंसर डेथ्स होती हैं महिलाओं की, उनमें से कितने परसेंट ब्रेस्ट कैंसर की वजह से होती हैं? 6%, 39%, 24% या 17%? 9 सेकेंड्स और हैं। महिलाओं की कुल कैंसर मौतों में से कितने प्रतिशत मौतें ब्रेस्ट कैंसर की वजह से होती हैं? 16 ऑफ यू आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। 24% इज द करेक्ट आंसर। आप में से 15 लोगों ने 39% को चूज किया, 6 लोगों ने 17% को और 4 लोगों ने 6% को। इंडिया में 2018 के डेटा, विच इज द लेटेस्ट डेटा जो हमारे पास है, लगभग 87,090 विमेन जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की वजह से उनकी मौत हो गई। और ब्रेस्ट कैंसर अकाउंटेड फॉर, टू बी प्रिसाइज, 23.5, which is 24% of all cancers related deaths in women in India. तो इस हिसाब से 1 in 4 deaths जो है कैंसर की वजह से, वो ब्रेस्ट कैंसर की वजह से होती है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये आज का थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले स्कोरबोर्ड पे आई थिंक न्यू नेम्स आ गए हैं हमारे स्कोरबोर्ड में। मदन, आदित्य, शीतल, मुकेश और गार्गी। शीतल और गार्गी आई थिंक अभी अभी हमारे स्कोरबोर्ड में आए हैं। और इस क्वेश्चन के साथ किशोर एम इज द हाईएस्ट क्लाइंबर
लेट्स सी लास्ट में कौन जीतेगा ये क्विज। पजल क्वेश्चन फॉर डबल पॉइंट्स। ब्रेस्ट कैंसर की घटनाओं की दर के आधार पर इन देशों को उच्च से निम्न में रैंक करें। आपके ऑप्शंस हैं यूएस, न्यूजीलैंड, इंडिया और डेनमार्क। आपको इन देशों को उनके इंसिडेंट रेट्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के आधार पर उन्हें ज्यादा से कम के क्रम में लगाना है। जहां सबसे ज्यादा केसेस आपको लगता है ब्रेस्ट कैंसर के होंगे वो सबसे पहले आएगा, और उसी ऑर्डर में आप रैंक करके जो जहां सबसे कम लगता है वो सबसे लास्ट में, और उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। 30 more seconds. अपने बायसेस को साइड पर रख के खेलिए। सोचें कि गेम ऑफ फैक्ट्स है तो कुछ ट्रिक क्वेश्चन तो होगा ही, तो जो आपको लगता है शायद वो ना हो। 5% लोगों ने इसका बिल्कुल सही उत्तर दिया है, और जो करेक्ट ऑर्डर है वो है न्यूजीलैंड, डेनमार्क, यूएस और फिर इंडिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी लोगों ने इंडिया को थोड़ा आगे रखा होगा, बट ये जो कंट्रीज हैं इनके कंपैरिजन में इंडिया इंडिया में सबसे कम केसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर हैं, और ये रेट्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर पर 100,000 विमेन है। न्यूजीलैंड में 92.6, डेनमार्क में 88.8, यूएस में 84.9 और इंडिया में 25.3। तो चलते हैं हमारे स्कोरबोर्ड की तरफ, और मदन, अनुज, आदित्य, शीतल और गणेश अभी अभी हमारे स्कोरबोर्ड में आ गए हैं। चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। शहरी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा ग्रामीण महिलाओं की तुलना में अधिक है। रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर अमंग अर्बन फीमेल्स इज हायर देन रूरल फीमेल्स। क्या ये सही है या गलत? थर्टीन ऑफ यू आपने करेक्ट आंसर दिया है, ये सही है। आई थिंक थोड़ा बायस चैलेंज हुआ है यहाँ। अर्बन एरियाज में 1 in 22 women जो हैं दे आर लाइकली टू डेवलप ब्रेस्ट कैंसर ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, और रूरल एरियाज में 1 in 60 women आर लाइकली टू डेवलप ब्रेस्ट कैंसर ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। तो चलते हैं स्कोरबोर्ड की तरफ, और गणेश आई थिंक वो लास्ट 2 क्वेश्चंस में ही हमारे स्कोरबोर्ड में 3rd पोजीशन पर आ चुके हैं। तो आई थिंक पिछले क्विज में कोई पूछ रहा था कि वो काफी उनको फील हो रहा था कि वो स्कोरबोर्ड में काफी नीचे हैं, तो क्या ऊपर आ पाएंगे कि नहीं। इट इज वेरी मच पॉसिबल इफ यू स्टे टिल द एंड, क्योंकि स्कोरबोर्ड बहुत ही ज्यादा डायनेमिक है और बहुत सारे डबल पॉइंट्स क्वेश्चंस होते हैं, तो आप यू नेवर नो हाउ लकी यू गेट एंड आप कब जीत जाएं। उनके बाद है आदित्य और पद्मजा, और इस क्वेश्चन के साथ ममता इज द हाईएस्ट क्लाइंबर। आज के क्विज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और डबल पॉइंट्स क्योंकि लास्ट में मुझे अच्छा लगता है स्कोरबोर्ड पूरा शिफ्ट होते हुए देख। किस देश में ब्रेस्ट कैंसर की घटना दर सबसे अधिक है? विच कंट्री हैज द हाईएस्ट इंसिडेंट रेट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर? यूके, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड? सिर्फ 9 लोगों ने इसका बिल्कुल सही उत्तर दिया है, और बेल्जियम करेक्ट आंसर है। इनफैक्ट बेल्जियम इज द हाईएस्ट इज द कंट्री विद द हाईएस्ट इंसिडेंट रेट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, और लगभग 113.2% 113.2 पर 100,000 विमेन। तो सबसे ज्यादा जो है वो बेल्जियम में कैंसर केसेस, ब्रेस्ट कैंसर केसेस हैं। मैं देख रही हूँ कि आप में से 13 लोगों ने, मेजोरिटी ने न्यूजीलैंड को चूज किया, शायद पिछले क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए, बट दैट्स हाउ
मैं ऑब्वियसली यही टेस्ट करना चाहती थी कि आप अपने बायसेस के साथ खेलेंगे कि डिफरेंटली, बट जो करेक्ट आंसर है वो है बेल्जियम। एंड अब हम अपने पोडियम को देखेंगे और आज के विजेता हमारे क्विज के, ऑन द थर्ड प्लेस वी हैव 578082। आई थिंक युक्ता कह रही है कि ये गेम पिन उन्होंने गलती से एंटर कर दिया अपने निकनेम में। सेकंड पोजीशन पे है नीलव एंड फर्स्ट पोजीशन पे आज के विनर है मदन। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, रनर्स अप हैं अनुज और गणेश। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल थ्री ऑफ यू। आप एक बहुत ही खूबसूरत बुक जीत कर जाएंगे आज, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। और जैसा कि रश्मि ने कहा कि हमारे चैंपियनशिप्स आर गोइंग टू बी हेल्ड सून, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड और गेम ऑफ फैक्ट्स में जरूर आइए। ये आपके लिए एक सोर्स ऑफ प्रैक्टिस है, आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड फाइनली चैंपियनशिप्स जीत सकते हैं। एंड अपना प्राइज क्लेम करने के लिए आप जो गूगल फॉर्म्स का लिंक आपको दिया है उसमें अपनी डिटेल्स डाल दीजिएगा। आपकी प्राइसेस, आपके बुक्स आपको जल्द से जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी हैप्पी वीकेंड।